everyone, I am Said Maram, pursuing MTech Data Technology in BHU campus. I am going to explain the basic principle involved in fermentation, technological aspects of pickles, vegetables like saltwood and cucumber. Fermentation is a metabolic process that produce chemical change in organic substrate through the action of enzyme. मेटाबॉलिक क्या है? जो मेटाबॉलिक है ये एक प्रोसेस है. इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं. ब्रेकडाउन किसके बीच में होता है? ग्लूकोज के बीच में. किसके एक्शन ऑफ एंजाइम के थ्रू. एंड ये सेकंड वन इज अ बायोकेमिस्ट्री. इट इज ए डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स इन द absence ऑफ ऑक्सीजन. ये भी सेम होता है लेकिन किसके रूप में होता है? एक्सट्रैक्शन जो होता है वो सेम होता है, बस किसके एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. थर्ड वन इज अ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज अ फूड प्रोसेसिंग, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स टू अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स. वो प्रोसेस कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें? ऑर्गेनिक और अल्कोहल को और ऑर्गेनिक एसिड में. किसके मदद से? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से. द ईस्ट बैक्टीरिया अंडर द एनारोबिक कंडीशन. Types of fermentation. Homofermentation. Only one type of product form. And the second one is a heterofermentation. More than one product form. On the basis of end product form, fermentation can be categorized as follows. Lactic acid fermentation, alcohol fermentation, acetic acid fermentation, butyric acid fermentation. Types of fermentation process. Batch fermentation process, feed batch fermentation process, continuous fermentation. First of all, for batch fermentation is a closed technique in which the small quantity of nutrient in inoculation with a variety of organism to lead the fermentation. Batch fermentation is the traditional process. During this fermentation process, no ingredient are added after inoculation, except based on the or acid in the control pH. In this fermentation process, organism effects in the highly substrate concentration primary and a high product concentration. Lastly, observe that follows the promotion of anaerobic cultivation in fermentation. The anaerobic medium which is sterile air to produce constant flow of oxygen. Gases by the products such as the carbon dioxide, and remember gas removal process and aeration takes place in this process. Continuous process. In this continuous process of the fermentation, new medium is constantly added in the system along with the continuous removal of product from the bioreactor. Second one is this support the cell in the growth phase and keep the capacity of reactor constant. Thus, study started to attain the concentration between the microorganism behaviors and established depending upon the ability to consider of the nutrient. Third one is the continuous products are formed with a high yield. In continuous strict tank, the reactant are the very well mixed. Other name of the reactor is the back mixed reactor, continuous feed process in the specific further of continuous bioreactor. Feed batch fermentation. Feed batch fermentation process is a system in the batch fermentation and continuous fermentation. During whole fermentation process in feed batch or semi-continuous process, growth is taken off the reactor. However, the rate of nutrient are the limited that help in increasing yield of product and controlling the reaction rate. The second one is in this process, a sterilized condition are the maintained during the operation, and the yield is the fermented collected at the process as in the batch bioreactor. And third one is and elaborate the sequence of the equipments in the necessary to maintain substitute feed rate with the accurate constant in the feed batch reactor. This is a figure feed batch reactor. First of all, fluid inlet, and addition of pump and mixed very well, and filter pump हो गया, screen module हो गया, housing हो गया, diaphragm हो गया, and controlling. Basic principle involves in fermentation. Fermentation is based on the principle of anaerobic respiration. किस पे based है ये? Anaerobic respiration पे. For the deriving energy for the breakdown of carbohydrates such as glucose. Carbohydrates को किस पे breakdown करता है? Glucose में. In this process, glucose is the first broken to the pyruvates by glucose. Glucose is the first breakdown of pyruvates by the glucolysis. ठीक है? The pyruvates is then converted to alcohol or lactic acid along with the regeneration of
NADA प्लस कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल को NADA में. This process is anaerobic respiration produce only 5% of energy obtained by the anaerobic respiration. उसी वो 5% एनर्जी लेता है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में. This is a diagram, glucose and the lactic acid, pyruvic acid, ethanol plus CO2. This is a figure. Technological aspects of the pickling vegetables like saltwood and cucumber. Legal definition of a specific in India. In the Food Safety and Standards (FSS) Rules 2026, that define the pickles as a preparation of made from fruit, vegetables, or edible plants materials, including mushrooms, free from insects and damage of the fungal infection. Single or the many combination prevent in the salt, acid, sugar, and of any combination of these. The pickles may contain onion, garlic, ginger, sugar, cherry, edible vegetables, oil, green, and the red chilies, spices, and the more than enough. It shall be free from copper, minerals, acid, alum, synthetic color, and the cells to in no sense of fermentation. Pickles may be a following combination of conforming to requirement as given below. Pickle is the acidic juice of brine, drain weight not less than 60%, sodium chloride content when the packed in the brine not less than 12%, acidity of citric acid when the packed in a citric juice not less than 1.2%, pickled in oil, drain weight not less than 60%, fruit and vegetables pieces shall partially remains submerged in oil. Pickles in vinegar, drain weight not less than 60%, acidity of vinegar as acetic acid not less than 2.0%, drain weight not less than 60%. Principles of pickling. There are the mainly two methods of preserving fruits and vegetables, namely by the killing all microorganisms responsible for the spoilage, by the heat or the other means, and that checking the entry of the fresh microorganism into the preserved product. Second one is by the making the condition most unfavorable for the growth of multiplication of microorganisms. Role of ingredients: salt, vinegar, lactic acid, oil. Salt also helps to draw water and the sugar out of plant tissues during the fermentation of vegetables. वो क्या करता है, वाटर एंड शुगर को ड्रॉ करता है किस टाइम, प्लांट टिश्यूज को किस टाइम यूज करता है, रिमूव करता है, जब हम लोग इसको फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं. दिस वाटर एट द फर्मेंटेशन बाय द फिलिंग एनी एयर पॉकेट्स प्रेजेंट इन फर्मेंटेशन वर्क. वो सबको फिल करता है जो प्रेजेंट फिल करता है पॉकेट्स को, and the resulting in the reducing oxygen condition that वो ऑक्सीजन कंडीशन को रिड्यूस करता है एंड ग्रो करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, जो वो उस कंडीशन में वो रह सके. विनेगर रेंडर द प्रिजर्वेटिव एक्शन इन द विनेगर पिकल्स. विनेगर क्या करता है, जो एक्शन होता है उसको होने देता है. द फाइनल कंसंट्रेशन द एसिड एज एसिटिक एसिड इन द फिनिश प्रोडक्ट शुड नॉट बी लेस देन 2%. वो लेस देन 2% से कम नहीं होना चाहिए. द कंफर्म सेटिस्फैक्टरी प्रिजर्वेशन इफेक्ट, जब कंफर्म कर लेता है, सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, उसके बाद द वाटर लाइबिलिटी फ्रॉम द टिश्यूज एंड द डाइल्यूट, वो जो वाटर लाइबिलिटी है वो डाइल्यूट हो जाता है विनेगर के साथ. द इफेक्ट ऑफ काउंटर द प्लेसिंग ऑफ द वेजिटेबल्स इन स्ट्रॉन्ग विनेगर about 10% acidity from the several days before the final pickling. The treatment also facilitated expulsion of the gas trapped in the intercooler space of the vegetable tissues. And the third one is the lactic acid. Lactic acid bacteria is the capable of the growing in the action media, and they can also produce acid through their action on the substrate in the event in the presence of 8% salt. बैक्टीरिया क्या करता है, केबल करता है किसको, मीडिया को, कैन प्रोड्यूस एसिड थ्रू द एक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट. एडिशन ऑफ द salt does the suppresses the growth of undesirable organism with allow to the lactic acid fermentation. When vegetables are placed in the brine, osmosis promotes the diffusion of the soluble materials present in them into the salt, water, and the techniques penetrates into the tissues. And the part of containing minerals matters. The soluble materials contain the fermentable fruit sugars that serve as the food from the lactic acid bacteria, which convert them into the lactic acid and the volatile acids.
When fruit or vegetables are completely submerged in the edible oil, mostly mustard oil, and the oil acts as a herbal from the air and from the anaerobic environment that is utilized by the native bacteria from the production of lactic acid. Oil also prevent growth of spoilage causing the eastern mold. Oil का क्या काम है? उसको मर्ज करके हम लोग रखते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव के थ्रू। और इसका मेन रोल ये है कि वो किसी तरह का हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है, और वो जो सेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज करता है, और किसी तरह का बर्बाद मतलब किसी तरह का अनडिजायरेबल ईस्ट एंड मोल्ड को ग्रो नहीं होने देता है। लास्ट वन इज सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड क्या होता है? जो हम लोग सॉफ्टवुड जो होता है एक गैबेज गैबेज को हम लोग क्रश कर देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग फर्मेंटेट करके उसको हम लोग पिकलिंग के रूप में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? गैबेज लेते हैं, रिमूव करते हैं, वॉशिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर फर्मेंटेशन करते हैं, फिर पैकेजिंग करके हम उसको रख देते हैं एज अ रेफ्रिजरेशन में, या हम लोग रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके या नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग रख देते हैं उसको। लास्ट वन इज अ कुकुम्बर। कुकुम्बर जो है उसको हम लोग वॉश करते हैं, कट करते हैं, उसको ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग डिप करते हैं, फिर फर्मेंटेड होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ अचार, एज अ फूड इंग्रेडिएंट, एंड यू कैन एंजॉय योर मील। लास्ट वन इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स इन वेजिटेबल्स फर्मेंटेशन। ये 5 बैक्टीरिया है जो यूज होते हैं सॉफ्टवुड में पिकल्स बनाने। पिकल्स के टाइम ये सारे बैक्टीरिया का मेन रोल है। एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। सो मच अगेन, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें और मोटिवेट करें कि हम ऐसा ऐसा वीडियो और आप लोगों के सामने ला के रख सकें। थैंक यू सो मच।